Worksheet 2, Understanding Quadrilaterals. Okay, from question number 6 to 10. Question number 6 is two adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 3:8 and its perimeter is 110 centimeter. Find the sides of the parallelogram. Okay, we know that the opposite sides of parallelogram are equal. ABCD is a parallelogram. The ratio in the adjacent sides, the opposite sides are equal. Okay, suppose AD equal to 3x, then the AB equal to 8x. The ratio is 3:8. Let the sides of a parallelogram ABCD are 3x and 8x. Let the adjacent sides, okay, the adjacent sides of a parallelogram of ABCD are 3x and 8x, and the perimeter is given that 110 meter. The formula of perimeter equal to same formula like rectangle. जो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी इक्वल होती हैं. ये 3x है और ये 8x, तो 2 टाइम्स, तो 110 इक्वल टू 2 टाइम्स 3x प्लस 8x. 2 टाइम्स 8x 11x, 3x प्लस 8x 11x इंटू 2 इक्वल टू 110. x इक्वल टू 110 divided by 11 into 2, 22. Now cancel by 22, we get 5. It means x equal to 5. Then the sides are AB equal to 8x. It means 8 into 5, 40. Meter or the centimeter? The unit is centimeter. AB equal to CD. Therefore, CD is also equal to 40 centimeter. And the AD equal to BC. Opposite sides of parallelogram 3x. It means 3 into 5, 15 centimeter. Okay. Next, question number 7. The question number 7 is one side of a parallelogram is 3/4 times of the adjacent side. If the perimeter of the parallelogram is 70 centimeter, find the sides of the parallelogram. The one side is 3/4 of the other. Let the one side is x, then the other is 3/4 of x. And opposite sides are equal, it means this one is x and 3/4 of x. Okay. Let AB equal to x. Then BC equal to 3/4 of x. And opposite sides are equal, then the formula is 2 times L plus B equal to perimeter. 2 times x plus 3/4 of x equal to 70. Okay, now solve 4. Take 4 LCM. Okay, so we get 4 into x, 4x plus 3x, 70. 2 cancel. Now 7x equal to 2 into 70. Now cancel by 7. We get 20. X equal to 20. Now the length AB equal to CD equal to 20 centimeter and AD equal to BC 3/4 of 20. 5 cancel करेंगे 5 से, it is equal to the 15 centimeter. 20 centimeter and 15 centimeter. The question number 8. ABCD is a parallelogram whose diagonals intersect at right angle. If the length of the diagonal is 6 centimeter and 8 centimeter, find the length of all the sides of the parallelogram.
Question number 8. ABCD is a parallelogram whose diagonals AC and diagonal BD intersect each other at right angle at a point O. Given that the diagonal AC equal to 8 centimeter and BD equal to 6 centimeter. Find the sides of the parallelogram. Let the sides equal to x. Let the side of parallelogram equal to x. ओके, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो डायगोनल्स क्या कहते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर. द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, अगर दोनों बाइसेक्ट ईच अदर अगर राइट एंगल पर कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ रोम्बस. ईच अदर, ओके, इट मीन्स इट इज अ रोम्बस. रोम्बस मीन्स ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या कहलाता है? रोम्बस. तब हम लोग यहाँ पर AO बाइसेक्ट करेगा तो AO इक्वल टू AC बाई 2. इट मीन्स 8 बाई 2 4 सेंटीमीटर. एंड BD BO OB BD बाई 2. इट इज 6 बाई 2 3 सेंटीमीटर. अब ट्राइंगल AOB कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल. AOB इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमको दिया हुआ है कि राइट एंगल पर काटते हैं. तब हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम. क्या लगेगी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस होगा AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू द रेस्ट ऑफ द टू साइड्स स्क्वायर. तो दिस AO इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BO 3 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड AB. 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ओके, इट इज 16 प्लस 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड AB इक्वल टू अंडर रूट 25, इट इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने पहले ही बताया ये क्या है? एक रोम्बस है. लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन इट इज ए रोम्बस एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. AB इक्वल टू BC, CD and DA all are equal to 5 centimeter. Okay. Question number 9. In the figure दिया हुआ है इसमें, one pair of adjacent sides of a parallelogram is in the ratio 3:4. If one of its angle A is right angle and the diagonal BD equal to 10 centimeter, find the length of the sides of the parallelogram and perimeter of the parallelogram. तो ये भी हम लोग क्या दिखाएंगे? ABCD अगर एक रेक्टेंगल है या ये एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल निकाल सकते हैं. ABCD is a parallelogram, okay, in which AB equal to 4x and AD equal to 3x and diagonal BD equal to 10 centimeter and angle DAB इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमको दिया हुआ है. जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ट्राइंगल ADB इज ए राइट ट्राइंगल. एक एंगल 90 डिग्री है, इट मीन्स इट इज ए राइट ट्राइंगल. ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर यहाँ यूज होगी. क्या होगी? AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर. ओके, तो AB is 4x and AD is 3x whole square equal to 10 square. 25x square, sorry 16x square plus 9x square equal to 100. 25x square equal to 100 and x square equal to 100 by
25. We get 4. Therefore, x is equal to square root of 4, 2. Now find the sides of the parallelogram. Okay. The sides of the parallelogram AB equal to 4x means 4 into 2, 8 centimeter. Similarly, AD equal to 3x, 3 into 2, 6 centimeter. X is equal to 2. Now perimeter, second part. तो perimeter में क्या है? AB equal to CD and AD is equal to BC. क्यों? Opposite sides of parallelogram. Perimeter equal to 2 times L plus B. 2 times 8 plus 6. It is 2 into 14, 28 centimeter. This is the perimeter. Number 10 is ABCD is a quadrilateral in which AB equal to CD and AD equal to BC. Show that it is a parallelogram. It means opposite sides of a quadrilateral are equal. It is given that ABCD is a quadrilateral. Okay. The opposite sides are equal means AB equal to CD and BC equal to AD. Now join one of its diagonal. Then prove ABCD is a parallelogram. ABCD is a quadrilateral. In which AB equal to CD and BC equal to AD. Again, next step, join AC. Now prove two triangles are congruent. Which triangle? ABC and CDA. Okay. अब प्रूफ करेंगे इसका. क्या प्रूफ करेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, AB equal to CD. It is given. Okay. Next part, BC equal to AD. It is also given. And the side AC equal to CA common. AB equal to CD, BC equal to AD and the side AC is common. Therefore, triangle ABC congruent to triangle CDA by SSS congruence criteria. Okay. Now, angle BAC equal to angle ACD by CPCT, corresponding parts of triangle. Angle BAC equal to angle ACD, okay, by CPCT, corresponding part of congruent triangle. अगर similarly angle this equal to angle BCA equal to angle CAD KB by CPCT. They are forming a alternate angles. Okay, alternate angle. It means alternate angles are equal. Alternate angles are equal. If alternate angles are equal, then it means the sides are parallel. Therefore, AB parallel to CD and BC parallel to
AD. If alternate angles are equal, then the lines are parallel. AB parallel to CD and BC parallel to AD. Therefore, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. If the opposite sides are parallel, then it means it is a parallelogram. Okay. A quadrilateral whose opposite sides are equal and parallel, therefore it is a parallelogram. Hence proved.